परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुनकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की है कि मैं समयसार को कहूँगा। आचार्य भगवंत समयसार अर्थात ज्ञान और सुख का पिंड, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का पिंड, ऐसा ज्ञायक हर अधिकार में, हर गाथा में दिखाकर उसका उल्लंघन कराना चाहते हैं। ज्ञान और सुख का पिंड ऐसा ज्ञायक उसका अवलंबन लेने से जीव स्वसमय रूप परिणमन करता है। तो स्वसमय रूप परिणाम उत्पन्न होवे वो पर्याय का प्रयोजन है। और ज्ञायक का अवलंबन वो किसका अवलंबन लेना है उसका प्रयोजन है। दोनों प्रयोजन सिद्ध करना है। ऐसे समयसार में जीव अधिकार चलता है। जीव दोनों का स्वरूप उसके लक्षण से जानकर दोनों के बीच में भिन्न रूप श्रद्धान करके अजीव का लक्ष्य छोड़कर जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य करके परिणाम में शुद्धता प्रकट कराने का है। ऐसे जीव अधिकार की गाथा 65-66 चलती है। उसकी टीका आज गुजराती में पढ़ना है। प्रथम, निश्चय नहीं निश्चय नहीं का अर्थ छे सिद्धांती अथवा वास्तविकपणे कर्म अने करण। कर्म એટલે વર્તમાન ઉત્પન્ન થતી પર્યાય કર્મ। વર્તમાન ઉત્પન્ન થતું કાર્ય એને કર્મ કહેવાય। કરણ આ કાર્ય કરવા માટે, આ કર્મ કરવા માટે એનું સાધન, સાધનને કરણ કહેવાય। કર્મ અને કરણનું અભિન્નપણું હોવાથી કોઈ પણ પર્યાય ઉત્પન્ન થાય, કોઈ પણ દ્રવ્યની હોય એ એના સટકારકથી ઉત્પન્ન થાય છે। દરેક દ્રવ્યમાં પોતપોતાના 6 કારક ત્રિકાળ સ્વભાવ રૂપે છે અને 6 કારકને પોતપોતાનું પરિણમન છે। એ 6 કારક
દ્રવ્યની સત્તામાં એક સાથે અભિન્નપણે છે. તો અહીંયા કહ્યું નિશ્ચય નહીએ એટલે કે સ્વભાવથી વાસ્તવિકપણે જોઈએ તો કર્મ અને કરણ એનું અભિન્નપણું છે. જે એટલે કર્મ, જેના વડે એટલે કરણ વડે સાધન વડે કરાય છે, સાધન વડે થાય છે, તે જ છે. અહીંયા તેનો અર્થ છે પૂતગલ. તે એટલે 29 પ્રકારના વર્ણાદિ ભાવ પૂતગલ જ છે. શું કહ્યું? રંગ, રાગ અને ભેદ. રંગ એટલે વર્ણ, રાગ એટલે શુભ રાગ કે અશુભ રાગ, ભેદ એટલે યોગ સ્થાન, માર્ગના સ્થાન, ગુણસ્થાન એના ભેદો. આ રંગ, રાગ અને ભેદ એ પૂતગલનું કર્મ છે. એ પૂતગલનું કાર્ય છે. એ ઉત્પત્તિનું કરણ પૂતગલ છે. એ રંગ, રાગ અને ભેદ પૂતગલ સાથે અભેદ છે, અભિન્ન છે. એ 29 પ્રકારના વર્ણાદિ ભાવો પૂતગલ સ્વરૂપ હોવાથી તે પૂતગલ જ છે. એમ સમજીને એટલે કે એમ નિર્ણય કરીને, એમ યથાર્થ નિર્ણય કરીને હવેનો દ્રષ્ટાંત આપે છે. જેમ સુવર્ણનું પાનું એટલે કે સુવર્ણની લગડી સુવર્ણ વડે કરાતી હોવાથી કોઈ પણ પ્રકારના જેવર સુવર્ણથી કરાતા હોવાથી સુવર્ણ જ છે. સુવર્ણ અને સુવર્ણ આદિ ભાવો એ અભિન્ન છે. વર્ણાદિક ભાવો અને પૂતગલ અભિન્ન છે. જેમ સુવર્ણનું પાનું સુવર્ણ દ્વારા કરાય છે, તેમ વર્ણાદિ પૂતગલ ભાવો પૂતગલથી કરાય છે.
જેમ સુવર્ણ પાનું સુવર્ણ જ છે, બીજું કાંઈ નથી, સુવર્ણ સિવાય અન્ય નથી, તેમ 29 પ્રકારના વર્ણાદિ ભાવો અથવા વર્ણ રંગ અને ભેદ રૂપ ભાવો પૂતગલના હોવાથી પૂતગલમય જ છે, અન્ય નથી, એટલે જીવ નથી. હવે કે છે તેમાં જીવ સ્થાનો 29 પ્રકારના ભાવોમાંથી જીવ સ્થાન લીધા. જીવને રહેવાનું સ્થાન એકેન્દ્રી, બેઇન્દ્રી, ત્રણેન્દ્રી, ચારેન્દ્રી, પંચેન્દ્રી, બાદર અને સૂક્ષ્મપણું. પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્તપણું. તો જીવના સ્થાન બાદર, સૂક્ષ્મ, એકેન્દ્રી, દ્વિન્દ્રી, ત્રિઇન્દ્રી, ચારેન્દ્રી, પંચેન્દ્રી એવા પર્યાપ્તના 7 ભેદ ને અપર્યાપ્તના 7 ભેદ. નામની પૂતગલમય નામ પ્રકૃતિઓ વડે આ 14 પ્રકાર છે એ નામ કર્મની 93 પ્રકૃતિમાંથી જાતિ નામ કર્મ એમાંથી 5 વાત લીધી. એકેન્દ્રી, બેઇન્દ્રી, ત્રણેન્દ્રી, ચારેન્દ્રી અને પંચેન્દ્રી. પછી બાદર નામ કર્મ, સૂક્ષ્મ નામ કર્મ 5 ને 2 7. પર્યાપ્ત નામ કર્મ, અપર્યાપ્ત નામ કર્મ 7 ને 2 9. આ 9 પ્રકાર નામ કર્મની પ્રકૃતિના છે અને નામ કર્મની પ્રકૃતિ પોતે પૂતગલ છે. માટે 14 પ્રકારના જીવ સમાસ, જીવને રહેવાના સ્થાનો એ પૂતગલમય છે. એ 14 જીવ સમાસ જીવ નથી. શું કહ્યું આગળ? જીવ નથી. જીવ કેમ નથી? તો કે આ બધા ભેદો તો નામ કર્મની પ્રકૃતિ એના ઉદયથી જોવા મળે છે. નામ કર્મ પોતે પૂતગલ છે. એ જીવ નથી. હવે આગળ કે છે અને નામ કર્મની પ્રકૃતિઓનું પૂતગલમયપણું. હાજી हाजी आपने पर्याप्तक अपर्याप्तक बताया तो वो समझा दीजिए। हाँ, पर्याप्त और अपर्याप्त जीव ने अगले भव में जो घाती और अघाती कर्म
उसका बंधन किया है, उसमें से नया भव में अपर्याप्त कर्म का उदय हो तो जीव का नई गति में जो जन्म हुआ वहाँ उसका आयुष्य अंत मुहूर्त काल से कम होता है। एक अंत मुहूर्त काल से कम। तो एक अंत मुहूर्त काल में वो जीव को संयोग रूप जो शरीर मिला अंत मुहूर्त काल के लिए, वो शरीर अपर्याप्त कर्म के उदय के कारण उसकी इंद्री खिल सके इतनी योग्यता प्रकट होने से पहले वो जीव का देह विलय हो जाता है। तो उसका इंद्रियों खिल नहीं पाती। ऐसे जीवों को अपर्याप्त कर्म का उदय है और उसका फल अपर्याप्ति है। अपर्याप्ति है तो वहाँ उसका शरीर और इसकी इंद्री खिलवट पा सके इतनी योग्यता प्राप्त करे उसके पहले देह विलय हो जाता है। जैसे कि मनुष्य भव की बात करें तो माता को मालूम भी नहीं पड़ता कि मेरे शरीर में जीव आया और अंत मुहूर्त काल में देह विलय करके चला गया। उसको अपर्याप्ति कहते हैं। और पर्याप्ति हो तो उसकी इंद्रियों खिलवट पा सके ऐसी योग्यता लेके वो जीव आता है। और पर्याप्ति कर्म के उदय के कारण उसकी इंद्रियां पूर्ण रूप से खिलवट पाती है। अब आगे तो यहाँ बताया कि नाम कर्म का उदय वो पुद्गल है। उसके उदय के कारण 14 प्रकार के जीव समास, जीव के रहने का स्थान, वो भी पुद्गल है। और नाम कर्म की प्रकृतियों पुद्गलमयपणा क्या कहा શું કહ્યું? નામ કર્મની પ્રકૃતિ છે એનું પુદ્ગલમયપણું તો આગમમાં પ્રસિદ્ધ છે। આગમમાં આચાર્યોએ લખેલું છે, સિદ્ધાંત શાસ્ત્રોમાં
નામ કર્મની પ્રકૃતિઓને પૂતગલ કહી છે તથા અનુમાનથી પણ જાણી શકાય છે. આ વર્તમાન આપણને મળેલી 5 ઇન્દ્રિયો અને એ ઇન્દ્રિયના એક એક વિષયો સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ શબ્દ તેનો વિષય પણ રૂપી, ઇન્દ્રિયો પણ રૂપી, તો એ તો વર્તમાનમાં આપણને મળેલા શરીર ઉપરથી પણ જાણી શકાય છે. કેમ? તો આગળ કહ્યું, કારણ કે પ્રત્યક્ષ દેખવામાં આવતા શરીર આદિ મૂર્તિક ભાવો છે. राजू भाई, હાજી. तो सबका जैसे जितनी मतलब ये त्रय स्थावर एक इंद्रिय दो इंद्रिय सबके पर्याप्तक अपर्याप्तक अलग अलग होते हैं क्या? वैसे जनरल लिखा होता है. पर्याप्ति का विषय आज रात को कर्म तंत्र में आने वाला है, तो उसमें जो 6 प्रकार की पर्याप्ति है, तो कौन सी पर्याप्ति है, उसके कारण किसकी खिलवट होती है, वो आज रात को विषय चलने वाला है 9 से 9:45. अब देखो आगे. यहाँ तो क्या है, समयसार में आचार्य भगवान को परद्रव्य का लक्ष्य छुड़ाना है. परद्रव्यों में निकटवर्ती संबंध है शरीर को, 5 इंद्रिय को, द्रव्य मन को और द्रव्य कर्म को. वो जो निकटवर्ती संबंध है वहाँ गलती होने का चांस है और जीव गलती भी कर लेता है. जैसे हमने दृष्टांत दिया था एक बार कि वन जंगल में अंधेरे में आप चलकर निकले और पेड़ पर रस्सी पड़ा था और पवन के कारण उसका फफड़ाट हुआ, तो आपको ऐसा लगा कि सर्प है वहाँ. तो वहाँ गलती होने का चांस था और गलती भी हुई. वैसी तरह शरीर, 5 इंद्रिय, द्रव्य मन और कर्म का संयोग जीव के साथ इतना निकटवर्ती है कि आपको ये सभी के साथ जीव का निकटवर्ती संबंध देखकर आपको शरीर चेतनवंता लगेगा, इंद्रियों जानने का कार्य कर रही है ऐसा लगेगा, मन के माध्यम से विकल्प हो सकता है ऐसा लगेगा, और द्रव्य कर्म में जुड़ने से जो मोह राग द्वेष का आस्वाद आया वो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये कर्म का कार्य है. तो जीव का कार्य
और शरीर का कार्य, उसकी भिन्नता समझने के लिए सूक्ष्म और तीक्ष्ण उपयोग चाहिए कि कौन सी क्रिया शरीर 5 इंद्रिय द्रव्य मन की है, कर्म की है, और कौन सी क्रिया जीव की है। दोनों के बीच में निमित्तिक संबंध होते हुए भी जीव तो अपना कार्य चैतन्यमय कर सकता है और शरीर अपना कार्य यानी पुद्गल अपना कार्य पुद्गलमय कर सकता है। लेकिन तूने चैतन्यमय जीव पुद्गल का कार्य करता है और अचेतनमय पुद्गल चेतनमय जीव का कार्य करता है। ऐसी गलती निकटवर्ती संबंध के कारण तेरे में हो रही है। जैसे कि 5 इंद्रिय जानने का कार्य कर रही है, ऐसा हमारा अभिप्राय है। कोई आपको पूछे कि उसके मैरिज में ये लोग आए थे, आपने बोला हाँ आए थे। फिर उसने पूछा पक्की बात है, तो आपने कहा मैंने उसको मेरी नज़र से देखा है। मेरी आंखों से देखा है। तो देखने का कार्य क्या आँख करती है? मैंने उसकी आवाज़ मेरे कानों से सुनी है। क्या कान सुनने का कार्य करता है? आप स्पर्श करके देख लो। हाँ, लेकिन सुनने का काम तो कान करता है और देखने का काम आँख करती है, जानने का काम खाली ज्ञान करता है। देखने का कार्य के लिए दर्शन गुण है ना। दर्शन गुण करता है। और सुनने का काम फिर? सुनने का कार्य भी वो भी एक जानकारी है, वो भी ज्ञान करेगा। और जो आँख के माध्यम से देखा और जाना, दोनों कार्य एक साथ हो जाता है। दोनों में निमित्त आँख है, लेकिन दूसरी इंद्रियों में देखने का काम नहीं है। देखो, आपने कर्म का अभ्यास किया हो तो दर्शनावरणी कर्म, उसमें चक्षु दर्शन लिया और अचक्षु दर्शन भी लिया। चक्षु दर्शन में आँख ली, अचक्षु दर्शन में दूसरी चारों इंद्रियां ली। वास्तव में 5 इंद्रियों उसका उल्लंघन लेकर
दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग 5 इंद्रिय के विषयों को देखने और जानने के लिए चला जाता है। तो पांचों इंद्रिय दर्शन ज्ञान दोनों में निमित्त है। जब देखने की बात करो तो दर्शन उपयोग, जानने की बात करो तो ज्ञान उपयोग। लेकिन वो काम इतना स्पीड से हो रहा है कि हम उसकी भिन्नता को सोचने जितना समय नहीं रहता। देखो, अंध आदमी है, आप कोई खास प्रकार के परफ्यूम्स यूज करते हैं तो उसकी शोरूम पर से बोल देगा कि आइए, और आपका नाम भी बोलेगा। कोई चलकर आते हैं तो उसका पगरव, चलने का आवाज पर से पहचान जाते हैं कि कौन आया। तो अंध आदमी है, चक्षु इंद्री नहीं है। जब एक इंद्री नहीं होती है तो ज्ञान दर्शन उपयोग दूसरी इंद्रियों का अवलंबन लेकर जानन देखन कार्य कर लेते हैं। यहाँ तो सिर्फ विषय इतना ही लेना है, यहाँ जानने का विषय ज़्यादा नहीं लेने का है। समय सार में यहाँ तो विषय इतना लेना है कि जो 14 समास बताया, जीव का रहने का जो स्थान बताया, वो सब उद्गलमय है और वो उद्गल है, जीव नहीं। इतना पहले सिद्ध करना है। उन सभी से भिन्न जीव की सत्ता है। वो 14 पुद्गल है, उसका लक्षण भिन्न है, जीव का लक्षण भिन्न है। दोनों के लक्षण की भिन्नता का श्रद्धान और ज्ञान करके अजीव का पुद्गल का लक्ष्य छोड़ के जीव के लक्षण के माध्यम से जीव का परम पारणामिक शुद्ध स्वरूप है, वहाँ तक दृष्टि और उपयोग ले जाकर स्वभाव सन्मुख होकर उस पर दृष्टि रखकर, उपयोग रखकर सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट कराना है। तो जितने अजीव को हम अज्ञानी जीव मानते हैं, वो मान्यता विपरीत है। और ऐसी विपरीतता का त्याग करके, विपरीतता वो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व अनंत संसार का कारण है। वो मिथ्या अभिप्राय छोड़कर जीव पुद्गल की भिन्नता का भान करके
सम्यक दर्शन प्रकट कराना है। तो यहाँ 14 प्रकार की चौदह प्रकार के भाव को मूर्ति कहा, पुद्गल कहा, पुद्गलमयी कहा। वो तो आगम से भी जान सकता है, ज्ञानी के उपदेश से भी जान सकता है, न्याय युक्ति से भी जान सकता है, प्रत्यक्ष शरीर का ज्ञान करके भी ये बात तो सिद्ध कर सकता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। એવી રીતે ગંધ રસ સ્પર્શ રૂપ શરીર સંસ્થાન સહનન તેઓ પણ ઉદ્ગલમય નામ કર્મની પ્રકૃતિઓ વડે રચાયા હોવાથી ઉદ્ગલથી અભિન્ન છે। ગંધ રસ સ્પર્શ રૂપ શરીર સંસ્થાન અને સહનન એ જીવની સાથે અભિન્ન નથી, ઉદ્ગલની સાથે અભિન્ન છે। તેથી માત્ર જીવ સ્થાનોને પૂતગલમય કહેતા આ બધા એટલે ગંધ રસ સ્પર્શ શરીર સંસ્થાન સહનન બધા પણ પૂતગલમય કયા સમજવા। તો જીવના શુદ્ધ સ્વભાવ સિવાય બધું અજીવ એવું આચાર્ય ભગવંતે સિદ્ધ કર્યું। માટે વર્ણાદિક જીવ નથી એમ નિશ્ચય નહીંનો સિદ્ધાંત છે। આચાર્ય ભગવંત સાક્ષાત સિમંદર ભગવાન પાસેથી દિવ્ય ધ્વનિમાં 3 કાળ લાગુ પડતા સિદ્ધાંતો સાંભળીને આવ્યા છે। એ સિદ્ધાંતોને આત્માના અનુભવ સાથે મેળવ્યા છે। નિર્વિકલ્પ દશા છૂટતા આચાર્ય ભગવાન સવિકલ્પ દશામાં આવીને ભગવાન પાસે સાંભળેલા અને પોતે આત્માના અનુભવથી નક્કી કરેલા સિદ્ધાંતોમાં એમ આવ્યું કે આ વર્ણાદિ ભાવો પૂતગલ છે, પૂતગલમય છે, જીવ નથી, જીવમય નથી। જીવનું દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ એમનાથી ભિન્ન છે। આવું ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન હે જીવો તમે કરો તો તમે પણ સમ્યક દર્શનને પ્રાપ્ત કરશો। जो 65-66 गाथा में कहा उसको टीकाकार आचार्य अमृतचंद्राचार्य देव 2 श्लोक 65-66 गाथाना हार्दने विशेषपणे समझावा माटे श्लोक 38 और 39 लिखते हैं।
देखो 38वां श्लोक, उसका श्लोकार्थ। जो वस्तु से वस्तु का द्रव्य है, जो द्रव्य से जो भाव, भाव यानी पर्याय, तो जो द्रव्य से जो पर्याय बनती है वो भाव यानी वो पर्याय वो वस्तु ही है, वो द्रव्य ही है। किसी प्रकार अन्य वस्तु नहीं, यानी अन्य द्रव्य नहीं। उसका अर्थ क्या कि जो वर्णादि जो पुद्गल है, जो पुद्गल है और वर्णादिक उसका जो भाव है, वो वर्णादिक भाव पुद्गल द्रव्य ही है, अन्य वस्तु नहीं। यानी वो वर्णादि भाव जीव नहीं। फिर से अमृतचंद्र आचार्य देव सिद्धांत से बात करते हैं कि वर्णादिक भाव वो पर्याय है, वो पर्याय तो पुद्गल की है। तो वर्णादि भाव पुद्गलमय रहेंगे, वो जीवमय नहीं हो सकता, इसलिए वो जीव नहीं। ये जो श्लोक में ये बात बताई वर्तमान काल के लिए है कि तीनों काल के लिए है? तो कि तीनों काल के लिए है। अनादि से अनंत काल में वर्णादि भाव पुद्गल होने के कारण पुद्गलमय रहेंगे। अनादि से अनंत काल में कभी भी वर्णादि भाव जीव नहीं, जीवमय नहीं, वो जीवमय हो सकते नहीं। अब दृष्टांत देते हैं, ध्यान से सुनना। जिस प्रकार जगत में यानी विश्व में सोना से बना हुआ म्यान लोग सोनामय दिखते हैं, कभी भी तलवारमय दिखते नहीं। ध्यान से सुनना फिर से। म्यान और तलवार दो चीजें। म्यान सोने का होता है, तलवार लोहे की होती है। जब
तलवार म्यान में है तो वो तलवार को अज्ञानी कैसे देखेगा? तो कि अज्ञानी कहेगा सोने की तलवार। ज्ञानी ने तलवार को देखा, तलवार म्यान में है, फिर भी ज्ञानी ने कहा लोहे मई तलवार। कभी कभी ज्ञानी भी ऐसा कह दे कि सोने की तलवार। तो ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है? तो कि जब ज्ञानी सोने की तलवार कहेंगे तब ज्ञानी के ज्ञान में है कि तलवार तो लोहे की है, लेकिन सोने का म्यान का उसने संयोग किया है, तो उपचार से, व्यवहार से सोने की तलवार कहने में आती है। ज्ञानी को तलवार का भी ज्ञान है, सोने का म्यान है उसका भी ज्ञान है, दोनों की भिन्नता का भी ज्ञान है, और ये उपचार कथन है उसका भी ज्ञान है। वैसी तरह वर्णादि भाव उद्गल में से बना हुआ है। और जीव शुद्ध चैतन्यमयी है। जब ज्ञानी वर्णादि भाव जीव का है ऐसा कहे तब ज्ञानी को चैतन्य स्वभावी विनायक का भी यथार्थ ज्ञान है, नाम कर्म की प्रकृति के उदय के कारण रंग राग भेद उत्पन्न हुआ है उसका भी ज्ञान है, विनायक तो शुद्ध चैतन्यमय है और रंग राग भेद उद्गलमय है। ऐसा भेद रूप श्रद्धा और ज्ञान ज्ञानी को है। वो ज्ञान होते हुए ज्ञानी शायद उपचार से कथन करे तो ज्ञानी को उपचार का भी यथार्थ ज्ञान है कि वर्णादिक उसका जीव में आरोपण करके कहना के वर्णादिक
जीव का स्वरूप है ऐसा कहना वो उपचार कथन है ऐसा ज्ञानी जानता है। जैसा लोहे की तलवार होते हुए भी संयोग में सोने का म्यान होने के कारण सोने का म्यान का आरोपण तलवार में करके तलवार को सोने की कहना वो उपचार कथन है, व्यवहार कथन है। देखो भावार्थ, वर्णादि उद्गल से बने हैं, इसलिए पुद्गल ही है, जीव नहीं। फिर से गुजराती में श्लोकार्थ। जे वस्तुथी એટલે જે દ્રવ્યથી જે ભાવ બને એટલે કે જે પર્યાય બને તે ભાવ એટલે તે પર્યાય, તે વસ્તુ જ છે એટલે તે દ્રવ્ય જ છે। હવે આ વાતને સિદ્ધાંતમાં ઉતારીએ છીએ। જે પૂતગલથી જે વર્ણાદિ ભાવ બને તે વર્ણાદિ ભાવ તે પૂતગલ જ છે। વસ્તુ લખ્યું છે ત્યાં પૂતગલ લખો। અરે લઈ જવાનું હોય ને ડબ્બામાં લઈ જજે, એમાં બધું છે તો નહીં વળાકે મગ નહીં બધું હે। અચ્છા, Goodbye. Friends, the recording has started. Please note that your storage is almost full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. ફરીવાર All participants are muted and they can unmute themselves. શ્લોકાર્થ। જે વસ્તુથી લખ્યું છે ત્યાં જે પૂતગલથી જે ભાવની જગ્યાએ વર્ણાદિ ભાવ બને તે ભાવ એટલે વર્ણાદિ ભાવ તે વસ્તુ જ છે એટલે પૂતગલ જ છે। કોઈ રીતે એટલે કોઈ પણ પ્રકારે અન્ય વસ્તુ એટલે જીવ નથી। તો 29 પ્રકારના વર્ણાદિ ભાવ એ પૂતગલથી બનેલા છે, માટે વર્ણાદિ ભાવ પૂતગલ જ છે। કોઈ રીતે એટલે કોઈ પણ અપેક્ષાએ અન્ય વસ્તુ એટલે જીવ નથી।
અન્ય વસ્તુ, વસ્તુ એટલે જીવ, જીવ નથી. હવેનો દ્રષ્ટાંત, જેમ જગતમાં સોનાથી બનેલા જ્ઞાનને જ્ઞાન સોનાનું, પણ તલવાર તો લોખંડની છે. સોનાથી બનેલા જ્ઞાનને લોકો સોનું જ દેખે છે. કોઈ રીતે તેને તલવાર દેખતા નથી. એટલે કે કોઈ રીતે તેને લોખંડની તલવાર તરીકે દેખતા નથી. હવે ખરેખર શું છે? તો કે જ્ઞાન સોનાનું છે, તલવાર લોખંડની છે. પણ બંનેનો સંયોગ હોવાથી ઉપચારથી એમ કહેવાય કે સોનાની તલવાર ભેટ અપાણી. તો એ ઉપચાર કથન છે. વર્ણાદી ભાવોને જીવના કેવા, એ ઉપચાર કથન છે. ખરેખર જીવને એના સ્વભાવથી જોવો તો જ્ઞાન દર્શન ચૈતન્યમય સ્વભાવી છે. તલવારને એના સ્વભાવથી જોવો તો લોખંડમય છે, સોનામય નથી. ભાવાર્થ, વર્ણાદી પૂતગલથી બને છે, તેથી પૂતગલ જ છે, જીવ નથી. આમ કહીને આચાર્ય ભગવંતે વર્ણાદી ભાવો પૂતગલના કીધા. એટલા માટે કીધા કે હવે વર્ણાદી પૂતગલ છે તો એનું લક્ષ છોડ અને જ્ઞાયક સ્વભાવનું લક્ષ કરી સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરી લે. સમય થયો છે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિધિ ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. હાલતા ચાલતા સિદ્ધ, કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થ આચાર્ય, આગમના રચયિતા ભગવત શ્રી કુંકુંદ આચાર્ય દેવનો જય. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો મહિમા સમજાવનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય. વર્તમાન કાળે સર્વ શિષ્યોમાં શિરોમણી પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. All participants are muted and they can unmute themselves. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજમાન સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર
શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ, બધાને જય જિનેન્દ્ર. થેન્ક યુ. જય જિનેન્દ્ર. Thank you, Rajbhai. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર રાજુ.